Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 79th lecture of this series of CRPC. So the topic remainings are warrant trial on police report, warrant trial otherwise, summon trial, summary trial and reference. Let's see one by one each. इन टॉपिक्स में ज़्यादा कुछ डिक्टेशन के लिए नहीं है, so we are just reading and explaining and jot down the points then and there only. Please read 237. Please read 237 yourself. Now 238 onwards. You see, you have seen the court of session trial. If you have revised it, now you know the sequence. So when we read the warrant trial on police report, at some places 1 or 2 points are missing. You will find that. तो warrant trial on police report actually same है जैसा कि court of session trial था, excepting that this will be conducted by the magistrate and that will be conducted by the court of session. देखो, जो ट्रायल जितना लंबा होगा, अगर ट्रायल लंबा चल रहा है तो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उतने ही ज़्यादा हैं. द मोर डिटेल्ड द ट्रायल इज, द मोर you are following the principles of natural justice. And the court of session trial is always about the more grave offences. The court of session trial is about more grave offences. Therefore, the court of session trial is the longest, because in that the principles of natural justice are required more. And accordingly, as you go down to the smaller trials, the trial will become shorter and shorter. तो ये एक पॉइंट याद रखना, द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल इज लॉन्गेस्ट. And as you goes to the summary trial, it becomes shorter, and the offenses also becomes less grave. So let's start. When in any warrant case instituted on a police report, the accused appears or is brought before the magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 207. If you remember 207, that is handing over of the documents. अब उधर court of session में first it is committal of 209 और 323, committal of 209 और 323 if you remember. अब warrant trial में committal का कोई मतलब है नहीं. Therefore they are talking about satisfaction of the section 207, giving of the documents under section 207. All these things please go on noting down. वन मोर पॉइंट इन दिस, जो वारंट ट्रायल होगा आपका, उसमें एक और केस हो सकता है. पहले तो केस इज कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन. फ्रॉम देयर इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल, इट सेंड्स डाउन द केस टू द मजिस्ट्रेट. सच मजिस्ट्रेट विल ऑल्सो ट्राई इट एज ए वारंट ट्रायल ऑन द पुलिस रिपोर्ट. ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, सेक्शन 228. So उस एक पॉइंट को भी याद रखना. इन दैट वे ऑल्सो द मैटर कम्स टू द मजिस्ट्रेट एंड डायरेक्टली ऑल्सो इट कैन गो टू द मजिस्ट्रेट. सो जब भी आंसर राइटिंग लिखें तो ये दोनों पॉइंट को वेरीफाई कर देना. डायरेक्टली आ रहा है या तो पुलिस के थ्रू, दैट इज एक्चुअली द पुलिस रिपोर्ट, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू रिवर्ट बैक होकर, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पुलिस रिपोर्ट, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट. Next, if upon considering the police report and documents sent with it under section 173 and making such examination, if any, of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. अब इस प्रोविजन में और कोर्ट ऑफ सेशन के प्रोविजन में डिफरेंस बस इतना सा है, दैट कोर्ट ऑफ सेशन में दे आर सेइंग दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल ओपन द केस. यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द केस की बात नहीं कर रहे. दे आर नॉट सेइंग दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल ओपन द केस, बट इन एनी केस, इन एनी काइंड ऑफ ट्रायल, इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज इन्वॉल्व्ड, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही तो कोर्ट को बताएगा दैट दीज आर द मटेरियल एंड दीज आर द एलिगेशंस. So even if they are not writing that public prosecutor shall open the case, there will be a APPP or public prosecutor. Normally in these cases the APP, he will opening the case. Case opening यहाँ भी होगा, but by the APP, and the APP will tell the court that these are the allegations against the accused and these are the material on which I will prove my case.
So even if they are silent upon opening of the case in the warrant trial, the APP will always open the case, and thereafter the court will examine whether the charge shall be framed or not. तो ये कोई point of difference नहीं है, लेकिन बस फर्क ये है that there it is public prosecutor and here is APP. Then they are saying the magistrate considers the charge against the accused to be groundless. He shall discharge the accused and record his reasons for so doing. So it is same as court of session trial. बाकी का सब सेम है, बस ये जो टर्म है ग्राउंडलेस, ये जो टर्म है ग्राउंडलेस ये डिफरेंट है. उधर देखोगे तो द वर्ड ग्राउंडलेस इज नॉट यूज. 227 देखोगे आप, if upon consideration of the record of the case and the document submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding. So not sufficient ground for proceeding against the accused. So there is difference in the language. Here it is they are saying that there is no sufficient ground proceeding against the accused, and here they are saying that the allegations are groundless. उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I am just highlighting the difference between terms. Otherwise it is one and the same thing. दोनों का meaning same होगा. Charge against the accused to be groundless. He shall discharge the accused and record his reasons for so doing. अभी तक what difference you found? एक difference है वो committal वाला, और दूसरा difference है opening by the public prosecutor, and here they are silent about it, but still the opening is done by the APP. And the third difference you find is in the term groundless, and there is no sufficient ground, but that does not make any difference as such. So basic aim ये है कि अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल याद रखोगे और डिफरेंस याद रखोगे कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में एंड दिस ट्रायल वारंट ट्रायल में, बेशक आपको वारंट ट्रायल याद ना हो, अगर डिफरेंस वाले पॉइंट याद हैं तो लिखना सब कुछ कोर्ट ऑफ सेशन वाला ही है, बस अगर आपको डिफरेंस वाले पॉइंट याद हैं तो वहाँ पर आप मिस कर जाओ, उसको चेंज कर दो, बस जो डिफरेंस है उन पॉइंट्स को ना लिखो, उसकी जगह पे ये पॉइंट्स जो डिफरेंस है इसको लिख दो. So that way you can write warrant trial on police report also. If upon such consideration, examination, if any, and hearing the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. तो ये पॉइंट लगभग सेम है, बट यहाँ पे ये सफिशिएंट पनिशमेंट वगैरह की बात कर रहा है बिकॉज मजिस्ट्रेट हैज लिमिटेड कॉम्पिटेंसी, और कोर्ट ऑफ सेशन में सफिशिएंट पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे, एडिक्वेट पनिशमेंट की बात नहीं कर रही, बिकॉज द कोर्ट ऑफ सेशन इज हैविंग अनलिमिटेड कॉम्पिटेंसी. अदरवाइज ऑल थिंग्स आर सेम. द चार्ज shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. So it is same. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereupon. तो यहाँ पे भी वही लिखोगे आप, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे आपको वो भी बताना पड़ेगा कन्विक्शन के ग्राउंड क्या होंगे on the plea of guilt. That also you will write. If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried, or the magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix a date for the examination of the witnesses. ये भी सेम है, अगर हम plea of guilt नहीं करते, accused मना कर देता है या फिर कर लेता है plea of guilt, फिर भी magistrate conduct the trial, then the court will fix a date for the prosecution evidences, provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statements of witnesses recorded during investigation by the police. The magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summons to any of its witnesses, direct him to attend or to produce any document or other thing. This is also the same. एक बार date of prosecution evidence fix हो गया, then prosecution will apply the list of prosecution witnesses to have to be summoned and appear into the court, or some documents to be produced.
On the date so fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidences as may be produced in support of the prosecution. Same. Provided that the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witnesses for further cross-examination. Exactly the same. The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence. And if the accused puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record. अब ये वाला पार्ट भी सेम है, लेकिन बीच में एक्यूटल वाला पॉइंट मिसिंग है. That is the main difference. That in court of session there is a scope of acquittal, but here there is no scope of acquittal. लेकिन इधर एक कमेंट है मेरा, you must appreciate. Normally the court will not go for the acquittal in such trials. पहले prosecution evidence record करेगा, फिर defense evidence record करेगा, then go on to decide the case. But if you go by the 102, unless the prosecution has proved the sufficient evidences, why should be the burden of proof shifted upon the defense? Section 102 तो लगेगा. Unless the prosecution has produced the sufficient evidences, why should the court shift the burden of proof on defense? Therefore, what I am suggesting is, even in such trials, the court has the competency to acquit the accused. प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद 313 का एग्जामिनेशन तो कंपलसरी होगा. सो 313 का एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का इज कंपलसरी हियर आल्सो एंड इन कोर्ट ऑफ सेशन आल्सो इन एवरी ट्रायल. तो 313 का एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा. आफ्टर दैट इफ यू फाइंड दैट द सफिशिएंट एविडेंसेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन and as per section 102 there is no need of shifting the burden of proof, then the court will not go for shifting. Rather the court does have power in such cases also to acquit, but in maximum practice the court will not do, because the trial do not require that. So they right away go for the practice. So they right away go for the examination of defense witnesses and evidences also. Write down. In the warrant trials on police report, the point of acquittal after prosecution evidence is not provided. However, in such cases also, if after the prosecution evidence is over and the examination of section 313 is conducted and the court finds that the prosecution has not sufficiently proved his case, then as per section 10 of Indian Evidence Act, the burden of proof will not shift upon the defense, and therefore even in such cases, if the judicial magistrate acquits the accused after the prosecution evidence, it will not be illegal. So if the court finds that the prosecution has not sufficiently proved his case, then as per section 102 of Indian Evidence Act, the burden of proof will not shift upon the defense, and therefore even in such cases, if the judicial magistrate acquits the accused after the prosecution evidence, it will not be illegal. So this is about clause 1. Let's see clause 2. If the accused, after he has entered upon his defense, applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination, or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such grounds shall be recorded by him in writing. So it is same as the court of session, provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. अब ये कोर्ट ऑफ सेशन में लिखा है कहीं, read it again. Provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, मतलब कोई एक प्रोसिक्यूशन विटनेस अपीयर हुआ था, प्रोसिक्यूशन विटनेस के समय
का डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है या फिर कम से कम उसको अपॉर्चुनिटी मिला है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिला है उसको। नाउ द डिफेंस wants to call that witness again. There they are saying that that witness will not be allowed unless the court deems it necessary. So this is one point which is not in court of session. Means calling the prosecution witnesses at the defense stage. Calling the prosecution witnesses at the stage of defense. This can be done in the warrant cases, but in case of court of session it is not provided. Read it again. Provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, मीन्स डिफेंस में एंटर होने से पहले अगर किसी एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका था या फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, अब दोबारा जब डिफेंस में एंटर हो गया है, डिफेंस एविडेंस स्टार्ट हो गई, द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. Then the attendance of such witness is not compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. Clause 3. The magistrate may, before summoning any witness on an application under subsection 2, require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court. अब ये पॉइंट भी आपको कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं मिलेगा। विटनेसेस के अपीयरेंस के लिए ये जो एक्सपेंसेस है विटनेसेस का, उसके पैसे आपको बियर करने पड़ेंगे। दिस पॉइंट यू विल आल्सो नॉट फाइंड इन द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। फिर से पढ़ो इसको। द मजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एनी विटनेसेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर subsection 2 require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in court. So the differences you have seen, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल वाला पॉइंट, दूसरा वो जो ग्राउंडलेस वाला फ्रेज है, तीसरा डिफरेंस एक्यूटल वाला पॉइंट, और एक और डिफरेंस वो ओपनिंग ऑफ द केस वाला। ओपनिंग यहाँ पे भी होगा बट दैट एपीपी विल डू। फिर एक एक्यूटल वाला पॉइंट, एक्यूटल वाले पॉइंट पे डिफरेंस। देन समनिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एट द डिफेंस स्टेज, उसमें डिफरेंस है। देन द रीजनेबल एक्सपेंसेस बी पेड बाय द डिफेंस फॉर समनिंग द डिफेंस विटनेस, उसमें भी डिफरेंस दैट इज नॉट प्रोवाइड इन द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। नाउ इधर से 243 आफ्टर दिस वी वुड जंप बिकॉज सेक्शन 244 वगैरह दे आर रिलेटेड टू वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो अब हमको यहाँ से जंप करना पड़ेगा सेक्शन 248 ऑनवर्ड्स। तो इसको लिखते ही चले जाना, ये नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स दैट हाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम विच सेक्शन टू विच सेक्शन फॉर द वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब ये जो सेक्शन 248 ऑनवर्ड्स है दैट इज रिलेटेड टू वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट एज वेल एज कंप्लेंट एक्सेट्रा ट्रायल। सो ये 248 ऑनवर्ड्स दोनों के लिए पढ़ना होगा। वैसे हम एक ही बार पढ़ लेंगे अभी। इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच ए चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी he shall record an order of acquittal. If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. So that is also the same. Where in any case under this chapter the magistrate finds the accused guilty but does not proceed in accordance with the provisions of 325 or section 360. अब यहाँ पर डिफरेंस है, 360 is there in that also but 325 is not mentioned. I told earlier only कि court of session में it is not submitting the case to CJM, so that 325 का scope नहीं है, but here is it is magistrate, he may be required to submit to the CJM. तो 325 की बात यहाँ पे होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं होगी, बट 360 is there in both. He shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law. So rest of the thing is same, excepting the point that 325 cannot be there in the court of session trial. 325 means submission to the CGM, which cannot be done by the court of session. उसके बाद आपका previous conviction वाला पैराग्राफ आ गया। Where in any case
Under this chapter, a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of 211, and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge. The magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereupon. तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में भी सेम ही है। अब इसमें दैट्स ऑल। अब डेथ सेंटेंस का मैटर इसमें आएगा नहीं क्योंकि मजिस्ट्रेट कैन नॉट ग्रांट डेथ सेंटेंस। सो द ब्रॉड सीक्वेंस इन दिस इज व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम गिविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, देन ओपनिंग ऑफ द केस, ओपनिंग लिखा नहीं है बट APP हैज टू ओपन द केस, then हियरिंग ऑफ डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन ऑन चार्ज फ्रेमिंग, या तो आप यहाँ पे डिस्चार्ज कर दोगे और यू विल गो फॉर फ्रेमिंग द चार्ज। अगर चार्ज फ्रेम किया देन यू विल रीड एंड एक्सप्लेन द चार्ज टेकिंग साइन ऑल दैट, देन प्ली ऑफ गिल्ट। अब प्ली ऑफ गिल्ट पे या तो आप कन्विक्ट कर दो वहीं पे, व्हेन यू कन्विक्ट देन द जजमेंट विल बी पास प्लस सेंटेंस विल बी ग्रांटेड। अगर आपने कन्विक्ट नहीं किया देन द ट्रायल विल टेक प्लेस। ट्रायल में सबसे पहले क्या होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। When the trial will take place, then first of all the prosecution evidence, and prosecution will apply for the summoning of the witnesses, and one by one they will be examined in chief, cross-examined, re-examined. The case is put to rest by the prosecution, and then examination of 313 is compulsory. Then after that the defense witnesses would be examined, taken. Defense evidence अपने witnesses को सम्मन करवाएगा। बीच में यहाँ पे ये जो पॉइंट था APP वाला, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड, एंड देन द कमिटल वाला पॉइंट दैट इज आल्सो नॉट प्रोवाइडेड, बट आई टोल्ड यू 228 में कोर्ट ऑफ सेशन कैन सेंड द मैटर बैक टू द मजिस्ट्रेट। तो कमिटल के बाद भी वापस आ सकता है मजिस्ट्रेट के पास। एंड एक पॉइंट बीच में था जो एक्विटल वाला पॉइंट, दैट इज मिसिंग, बट आई टोल्ड यू दैट एक्विटल मे बी डन बाय द मजिस्ट्रेट ऑल्सो, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर डिफेंस विटनेसेस के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब समन्स पर कोर्ट में आस्क यू टू डिपॉजिट द फीस और रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर कॉलिंग द विटनेसेस। कोर्ट में रिफ्यूज टू समन ए पर्टिकुलर विटनेस इफ द कोर्ट बिलीव दैट यू आर कॉलिंग द विटनेस फॉर द वैक्सेशन और फॉर डिलेइंग और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, प्लस इफ ए witness, prosecution witness is already cross-examined by you, or the sufficient opportunity is given to you and now you are calling him here. So in that case the court may deny, and only in the rare case the court will give the permission. So summoning of earlier witnesses, this cannot be done normally, उसके लिए the court has to allow him in rare case। तो ये वाला पॉइंट है जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में नहीं है। उसके बाद व्हाट, द डिफेंस एविडेंस गेट्स ओवर। नाउ इसके बाद लास्ट में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द समनिंग ऑफ द केस, द आर्गुमेंट्स, बट ऑल दैट विल बी डन। तो समिंग अप ऑफ केस इज टू बी डन बाय द प्रोसिक्यूशन समिंग अप तो करेगा ही केस का। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्गुमेंट्स बिटवीन द पार्टीज, समिंग अप दैट दीज आर द एविडेंसेस on which the prosecution is rely, all will be done here also. So the prosecution would tell here also that these are the facts on which I approve, so the accused should be convicted. तो summing up अगर नहीं भी लिखा है, the summing up of the case and the argument between the parties will take place. So after the summing up and arguments, even if it is not provided in the warrant trial court, still the court do that. And after that the court will go for acquittal or it will go for conviction. अगर conviction कर दिया तो क्या, they are after the sentence. जब sentence कर दिया then what, sentence में the issues of, in sentencing the issues of 325 and 360 will arise, and also the issue of 211 clause 7 also arise, that is of previous conviction. So बहुत ज़्यादा material defense you will not find, एक आध जगह पे ये silent है। That will also be conducted in this trial also. Yes, opening of the case it will conduct, some summing up of the case will also conduct, arguments will be there. Acquittal वाला point वैसे करते नहीं है मजिस्ट्रेट, पर अगर चाहे तो कर सकता है। So the warrant trial on police report is almost the same as the court of session trial, except some 2, 3, 4 differences.
वारंट ट्रायल में आप याद रखिएगा जो 173 का पुलिस रिपोर्ट फाइल होगा ना, उसके बाद ही तो कॉग्निजेंस होगा, कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, और तब आएगा आपका वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट तब आएगा। मतलब अगर कंप्लेंट केस है तो उसमें वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट नहीं करोगे, इंफॉर्मेशन केस है तो उसमें भी वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट नहीं करोगे। इट इज़ ओनली इन द केसेस ऑफ पुलिस रिपोर्ट फाइल दैट वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट विल बी कंडक्टेड। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे कंप्लेंट केस होने के बाद भी वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट होगा, एंड आई हैव आंसर्ड दैट। सेक्शन 2D वाले में तो पुलिस रिपोर्ट इज वुड बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लेंट, तो उधर तो कंप्लेंट ट्रायल होगा। इन 2D द पुलिस रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी डीम्ड कंप्लेंट, तो डीम्ड कंप्लेंट है तो कॉग्निजेंस कंप्लेंट पे होगा, तो ट्रायल भी जो होगी हमारी कंप्लेंट ट्रायल होगी। तो वो सिचुएशन जहाँ कंप्लेंट केस था, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट वो होगा सेक्शन 228 वाली सिचुएशन में, जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन एक कंप्लेंट था, कंप्लेंट केस था, मजिस्ट्रेट ने 191 क्लॉज ए में कंप्लेंट लिया और उसके बाद कमिटल कर दिया अंडर 209। द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 228 finds that the court of session will not try this case, then the court of session will revert back the case। अब ये कोई भी केस हो, चाहे कंप्लेंट केस हो या पुलिस केस हो, now the magistrate will try it as if it is a warrant trial on as a warrant trial on police report। So this is the one example where the complaint case has to be tried as a warrant trial on police report। So write down, in the cases of warrant trial on police report, only the cases filed on police report shall be tried, but in one case wherein a complaint case was committed to court of session and that case under section 228 has been transferred by the court of session to the judicial magistrate, it shall be tried by the judicial magistrate as if it was a case instituted on police report, even though originally it was a complaint case। So we had seen the warrant trial on police report. Now let's see warrant trial otherwise than police report। Warrant trial otherwise than police report means what? Warrant trial on complaint और वारंट ट्रायल ऑन इंफॉर्मेशन, उसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ तक एक्यूटल और कन्विक्शन का सवाल है, लास्ट में सेक्शन 240 और 48 ऑनवर्ड्स तो सेम है, फ़र्क सिर्फ शुरू का है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज है ना, द डिफरेंस लाइज देयर। इन दोनों में द डिफरेंस बेसिकली लाइज एट द प्रोसिक्यूशन स्टेज। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, वारंट ट्रायल व्हेन द वारंट ट्रायल इज अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, that is under section 190 clause 1 clause A sub clause A and 190 clause 1 sub clause C। Otherwise means it is a case of 190 clause 1 sub clause A or C, that is of complaint or information। इसमें फ़र्क क्या होगा ये बता देते हैं। जो इसमें जो विटनेसेस हैं आपके, इसमें सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा, चार्ज फ्रेमिंग से भी पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की तो बात ही दूर है, चार्ज फ्रेमिंग से भी पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा और उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा पहले, और इसी एग्जामिनेशन इन चीफ के प्रोसेस में अगर कोर्ट को लगता है दैट देयर इज नो प्रेमा फेसाई केस, कोई प्रेमा फेसाई केस नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। इनिशियली देयर विल बी एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेसेस। सो राइट डाउन, इनिशियली देयर इज ऑलवेज एन एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेसेस। Initially, there is always an examination in chief of the witnesses। In that process, if the court finds that there is no prima facie case, the court will go for discharging the accused। And now, after the examination in chief is over and the accused is not discharged, then comes the stage of framing of charge। उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेमिंग के बाद एक्यूज्ड का प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा। अब प्ली ऑफ गिल्ट लेने के बाद अब एक्यूज्ड से पूछा जाएगा कि उन विटनेसेस में जिनका हो चुका क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, उनमें से किसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो। नाउ द विटनेसेस विल बी कॉल्ड अगेन फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड एट दिस स्टेज इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर आर सम मोर विटनेसेस
then they will also be examined in chief and cross-examined. So that is the only difference between this trial and the earlier trial. जब आप पढ़ोगे गौर से तो ये सारा डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा। सबसे पहले विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ, उसी प्रोसेस में चार्ज और डिस्चार्ज, इफ नॉट डिस्चार्ज उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ whom, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ these witnesses whomsoever the defense want to cross examine. क्रॉस के बाद if there are some more witnesses, और कुछ और witnesses हैं, then they will be summoned and they will be examined. अब ये जो बाद वाले witnesses जो बाद में आएंगे, इनका एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन साथ साथ चलेगा। सो डिफरेंस क्या है, शुरू में पहले चार्ज नहीं बनाती, जबकि और बाकी के ट्रायल में पहले चार्ज बनता है। यहाँ पे इसमें पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होंगे, देन यू विल गो ऑन टू फ्रेम द चार्ज, then the cross examination will be done. So let's see 244. When in any warrant case instituted otherwise than on a police report, when in any warrant case instituted otherwise than on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate, the magistrate shall, leave this part, when in any warrant case instituted otherwise than on a police report, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. तो शुरुआत में ही तो आप प्रोसिक्यूशन को सुनोगे और प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लोगे। एविडेंसेस लेगो मतलब आप विटनेसेस के एग्जामिनेशन इन चीफ करोगे। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेसेस। लेकिन उसी एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद अब अगर आपको लगता है देयर इज नो प्रिमा फेसी केस मेड आउट, तो आप डिस्चार्ज कर लो, या फिर एग्जामिनेशन इन चीफ के बीच में भी चाहो तो आप डिस्चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास इज दैट द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू ए समन टू एनी ऑफ द विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। दैट इज फाइन। विटनेसेस को सम्मान करने के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास देख लो, नेक्स्ट सेक्शन जिसमें लिखा हुआ है डिस्चार्ज के लिए, इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंसेस, if upon taking all the evidences referred to in section 244, taking all the evidences means what, जितने भी witnesses prosecution ने produce किए उन्हीं को तो एग्जामिन करोगे आप। अब prosecution has produced 10 witnesses, examine those 10 witnesses. If upon taking all the evidences referred to in section 244, the magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out which, if unrebutted, would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him. If upon taking all evidences, सारे witnesses को एग्जाम करने के बाद और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह witnesses लेके आ रहे हैं उनको देखने के बाद, the magistrate considers for the reason to be recorded that no case against the accused has been made out which, if unrebutted, would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him. मीन्स प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने कुछ ऐसा सफिशिएंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया है जिसकी वजह से हम माने कि उसके खिलाफ प्रिमा फेसी केस है, तो हम यहीं पर उसको डिस्चार्ज कर देंगे। आगे कह रहे हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस। व्हाट इज दिस प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस? While the examination is going on. This previous stage is while the examination is going on. If, for reasons to be recorded by such magistrate, he considers the charge to be groundless. अब देखो सबसे पहले the accused is brought before the magistrate. जब मान लो issue of process हुआ, issue of process के बाद arrest या warrant करके the accused appears. अब accused को उसके allegations तो बताओगे और फिर सीधा डेट फिक्स करोगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए। अब एक्यूज्ड का एलिगेशंस वगैरह बता के सीधा डेट फिक्स करेंगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए। देन द एक्यूज्ड विल अप्लाई फॉर द समन्स बिफोर प्रोसिक्यूशन विटनेस। एविडेंस चालू होंगे तो उससे पहले समन्स के लिए अप्लाई करेगा।
सपोज प्रोसिक्यूशन के पास 10 विटनेसेस हैं. Now these 10 witnesses has to be examined, but they have to be examined in chief. After the examination of all these witnesses, which is produced by the prosecution, all these 10, the court may discharge the accused. सारे witnesses देखने के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है नहीं इस केस में prima facie केस नहीं है, then the court may discharge the accused, या फिर it may discharge the at the earlier stage also. अब earlier stage means what? कम से कम 244 का एग्जामिनेशन तो शुरू हो जाना चाहिए. अब 244 का एग्जामिनेशन चालू हो गया. अब उसके बाद मान लो कोर्ट ने ये सिर्फ 5 विटनेसेस एग्जामिन किए आउट ऑफ द 10 विटनेसेस एंड फाउंड दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो कोर्ट यहाँ पे ही डिस्चार्ज कर सकता है. मीन्स एट एनी अर्लियर स्टेज, इट मीन्स 244 का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है. उसके बाद सारे विटनेसेस को, ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी थी प्रोसिक्यूशन ने, उसके सारे विटनेसेस को एग्जामिन करे बिना, कुछ विटनेसेस एग्जामिन हुए बस, कुछ को एग्जामिन करके भी आप डिस्चार्ज कर सकते हो, या फिर चाहो तो सबको एग्जामिन करने के बाद डिस्चार्ज करो. सो दैट इज मीन बाय अर्लियर स्टेज. अर्लियर स्टेज हियर मीन्स आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ 244 हैज स्टार्टेड. After the process of 244 has started means now after the witnesses are being examined in that course, without examining all the witnesses, you can discharge an accused at the earlier stage also, or you may discharge him after all the witnesses have been examined. All the witnesses have been examined. Now 246. If when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, the magistrate is of the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अब कह रहे हैं कि ये सारे विटनेसेस एग्जामिन कर लिए, कितने हैं? 10 हैं. अब ये 10 विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को लगा देयर इज prima facie केस, द कोर्ट विल गो फॉर फ्रेमिंग द चार्ज. या फिर एट द अर्लियर स्टेज ऑल्सो, जैसे ये 5 विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को यहाँ पर लगा दैट देयर इज सफिशिएंट टू सजेस्ट दैट देयर इज अ prima facie केस, कोर्ट यहीं पर चार्ज फ्रेम कर सकता है. इट इज नॉट दैट कि सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद ही कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा. जिस तरीके से आप बीच में डिस्चार्ज कर सकते हो उसी प्रकार से आप बीच में चार्ज भी फ्रेम कर सकते हो. अब इस केस में क्या होगा? द चार्ज इज फ्रेम्ड, ओनली द 5 विटनेसेस आर एग्जामिन्ड इन चीफ, और उसी स्टेज पे चार्ज फ्रेम कर दिया. सो 5 आर रिमेनिंग, टोटल 10 थे लिस्ट ऑफ विटनेसेस में. इन दिस केस द चार्ज इज फ्रेम्ड एंड ओनली द 5 विटनेसेस आर एग्जामिन्ड इन चीफ, 5 आर रिमेनिंग. अब कोर्ट क्या करेगा चार्ज फ्रेम करने के बाद? कोर्ट वुड हियर टेक द प्ली ऑफ गिल्ट एक्सेट्रा. एक्चुअली इस स्टेज पे यहाँ पर ही हो गया चार्ज फ्रेम, तो यहाँ के इसके बाद प्ली ऑफ गिल्ट एक्सेट्रा देगा. उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द अर्लियर विटनेसेस, ये जो यहाँ पे हुए थे, तो ये जो 5 विटनेसेस एग्जामिन हो गए हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाएगा. देन ऑल्सो द एग्जामिनेशन ऑफ द रिमेनिंग विटनेसेस, examination of the remaining witnesses. How many are remaining? These 5. So these 5 will be called for examination in chief as well as for the cross examination thereafter, after that. So let's see. If the accused refuses to plead, if the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried, or if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of next hearing of the case, or if the magistrate for reasons to be recorded in writing so think fit, forthwith whether he wishes to cross-examine any, and if so, which of the witnesses of the for the prosecution whose evidences has been taken. Okay, 2 3 रह गई अभी. The charge shall then be read. उसके बाद चार्ज बढ़ा जाएगा. And explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make. And if the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereupon.
And if the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried, or if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for reasons to be recorded in writing so thinks fit, forthwith whether he wishes to cross-examine any, and if so, which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken. तो ये जो पहले वाले जिनका 5 का एविडेंस हो गया है एग्जामिनेशन इन चीफ, उनमें से वो जिनको भी चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलवा सकता है। उसके बाद इफ ही सेज he does so wish, the witnesses named by him shall be recalled, and after cross-examination and re-examination, if any, they shall be discharged. अब इसके बाद remaining witnesses की बात आएगी। The evidence of any remaining witnesses of the prosecution. अब उसके बाद कितने बच गए थे यहाँ पे? 5। मान लो कोर्ट ने चार्ज लास्ट में फ्रेम किया तो 10 विटनेस को एग्जामिन करने के बाद किया, देन द रिमेनिंग विटनेस इज 0। अगर 10 में से 8 को एग्जामिन करने के बाद किया तो रिमेनिंग विटनेसेस इज 2। अगर बीच में कर दिया 10 में से 5 करने के बाद, देन 5 आर रिमेनिंग। मीन्स जो भी अगर कोई रिमेनिंग विटनेसेस है, नाउ ही विल बी कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मेरे वाले एग्जाम्पल में 10 विटनेसेस लेके आया था प्रोसिक्यूशन, हो सकता है वो 5 लेकर आए शुरुआत में, 4 लेकर आए, 3 लेकर आए, 2 लेकर आए, 8 लेकर आए, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, वॉट एवर। द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन shall next be taken, and after cross examination and re examination, if any, they shall also be discharged. अब उसके बाद फिर एविडेंस फॉर डिफेंस तो नॉर्मल होगा जैसे होता है, डिफेंस सिर्फ यहीं तक है। उसके बाद पढ़ोगे द accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and the provisions of section 243 shall apply to the case. तो फिर डिफेंस 243 से अप्लाई हो जाएगा, डिफेंस सेक्शन 243 से अप्लाई हो जाएगा फिर। सो डिफरेंस कहाँ पर है? ओनली इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब इस वाली सिचुएशन में अगर मान लीजिए 10 विटनेसेस थे, 4 विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद ही अगर डिस्चार्ज कर लिया, देन नो मोर विटनेसेस शुड बी एग्जामिन्ड। इसमें तो जब पूरे विटनेसेस को एग्जामिनेशन करने के बाद डिस्चार्ज किया, पर इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि उसके बाद भी होगा। Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if, for reasons to be recorded by such magistrate, he considered that the charge to be groundless. अब 246 में अगर जाते हैं जब हम, वहाँ पे तो वो केस है जो रिमेनिंग विटनेसेस को हमने एग्जामिन नहीं किया, तब वहाँ पे तो हम एग्जामिन करेंगे। अब मान लीजिए ये 5 विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया, ना ही डिस्चार्ज किया, आपने सारे विटनेसेस को एग्जामिन किया, 10 विटनेसेस को एग्जामिन किया, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग पे गए, या तो एक ये सिचुएशन होगी, उसके बाद प्ली ऑफ गिल्ट लेंगे, उसके बाद डिफेंस से आस्क डिफेंस की किसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे वो बुलाएगा, या तो ये सिचुएशन होगी, या फिर कुछ विटनेसेस को 5, 4, 3, 2 कुछ को ही एग्जामिन करने के बाद आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, उसके बाद यू विल रीड ओवर द चार्ज एंड एक्सप्लेन एंड टेक द प्ली ऑफ गिल्ट। अभी आप चार्ज फ्रेमिंग से पहले बाकी विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करोगे। नाउ आफ्टर यू फ्रेमिंग द चार्ज, you ask the accused first, out of these witnesses which are already examined, do you want to cross examine any? If he say yes, then these witnesses which he want to cross examine would be called for cross examination. After that, the prosecution evidence is not over. After that, if you do not convict him on plea of guilt and you allowed him for the cross examination of these witnesses, now 6 witnesses are remaining in the list of the prosecution list, witnesses list. मान लो पहले 4 को किया था, तो अभी 6 बचे हुए हैं जो एग्जामिनेशन इन चीफ ही नहीं हुआ इनका। These witnesses would be called in examination in chief, and then the cross examination of these would be done by the defense. Now please read section 249 also.
249 is just in the complaint proceedings when the complainant is absent. तब क्या होगा? Mind you, here it is not information, it is complaint. When the proceedings have been instituted upon complaint. When the proceedings have been instituted upon complaint and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence. The magistrate may in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused. तो ये कई बार पीटी में पूछता है आपसे और मेंस में भी शॉर्ट नोट पूछ सकता है. अकेले तो इस सेक्शन को नहीं पूछेंगे, किसी और चीज से रिलेट करके पूछेंगे. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अगर एक कंप्लेंट केस है और कंप्लेंट केस में ट्रायल शुरू हो गया एंड द ट्रायल हैज स्टार्टेड, एविडेंसेस आर बीन रिकॉर्डेड एंड ऑन वन डेट एनी डे द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट है, देन द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू डिस्चार्ज द एक्यूज्ड प्रोवाइडेड द चार्ज हैज नॉट बीन फ्रेम्ड. सो अगर चार्ज फ्रेम हो गया है और तब कंप्लेनेंट एब्सेंट है, देन 249 विल नॉट अप्लाई. अब उसमें भी कंडीशन है, द कोर्ट विल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड, उसमें भी कंडीशन है व्हेन द ऑफेंस इज एदर कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो आप बिना कंपाउंडिंग के भी डिस्चार्ज कर सकते हो, और इट इज इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और या फिर ऑफेंस कंपाउंडेबल है, मीन्स क्या, छोटा ऑफेंस. नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल आर द less grave offenses. So in these cases they are saying compoundable cases and non-cognizable offenses, that is smaller offenses. In these cases they are saying that even if it is a complaint case, the complaint proceedings are started. In a complaint case, the complaint proceedings are started. The complaint proceedings started means what? The evidence of prosecution witness is going on. Charge has not yet been framed. चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुआ है और इस बीच में कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, देन इन दैट केस द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एंड डिस्चार्ज द एक्यूज्ड. लेकिन अगर चार्ज फ्रेम हो गया और उसके बाद के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, देन उस केस में 249 इज साइलेंट ऑन दैट, और उस केस में अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो तो आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते. सो रिमेंबर वन थिंग, नोट डाउन, 249 में एक्विटल का कोई स्कोप नहीं है. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिस्चार्ज. वैसे तो अब तक हमने पढ़ा था कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होता है, बट दिस इज द पेक्यूलियर केस. इन केसेस में जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस से स्टार्ट होता है उसी समय ट्रायल स्टार्ट हो जाता है. चार्ज तो बाद में होगा, द ट्रायल हैज स्टार्टेड. सो राइट डाउन, इन द केसेस ऑफ कंप्लेंट केसेस, once the prosecution evidence has started, in the cases of complaint cases, once the prosecution evidence has started but the charge has not yet been framed and the offense is compoundable or non-cognizable, then the judicial magistrate may stop the proceedings and may discharge the accused. Why the court is discharging? Because the complainant is absent. May discharge the accused. However, if the charge was framed thereafter under section 249, there cannot be any such discharge. If section 250 अपने आप देख लेना आप लोग, that will apply on both warrant and summon trial. This is basically about अगर आपने false case किया है without any cause, then you should have to pay compensation. और compensation पूरा detail लिखा है इसमें. So all detail is given in here for the compensation. So that's it for this topic and for this lecture. We would continue with the summon trial and summary trial in the next lecture. Thank you for watching.